So in today's class, we are going to study the radiative transitions. For example, जो हमारी the atomic transition, how we go from one. So we have previously seen how the various solutions of Schrodinger equation, how to relate them to the energy levels, how to relate them to the electron probability density. Now, in this class, we are going to study how we can have the radiation, which can be explained via transition from of electrons or different quantum particles from state A to state B. Such that, so if we just take reports जो हमारे पास बोहर का ये है that energy level from EM to EN is basically mu is basically EM minus EN by H. Basically is equal to H2, so we can say the difference of energy of two levels. You can explain it. So we have to show that this relationship arises in quantum mechanics. So if we, for example, if we have time independent wave function psi, wave function psi n of electron in a state of quantum number n, in a state of quantum number n, and energy En. So the product of time independent wave function psi n and a time independent frequency mu n can be written as En by h. Sorry, En by h. So अब हमारे पास ये होगा कि we have to have a side function, एक psi n के साथ represent करेंगे and the other is sin star, two states. We can represent psi n as psi n e to the power iota minus En by h into t, and so once we have sin star or sin diagonal, so it will be sin diagonal. So this iota minus iota will be plus iota En by n into t. Sorry, h. Now the expectation value or the position of such electron can be like this. So expectation value, if you want to write expectation value in terms of position, can be written as x psi star psi of nx dx. So we can further, if we want to reach here, it will be infinity to plus infinity x sin x should be e to what? It's x sin x and sin x star. So it will be since so we have written sin like this, sin star like this, sin star. So it is for iota inx I forward. So I'll write it here. So it will be rearrange the one in minus into some plus and minus, so we can write it as e for iota En minus En
En minus En, or as I did En by H, En by H, or again if we write it, or you can write it like this, minus infinity plus infinity, x sin star x dx. So this is a quantum state of a particle, a stationary state, which doesn't radiate. So in a non-radiating state, we have this thing. We can see a non-radiating or stationary state can be an expectation value can be written like this. अब हमारे पास more problem is that how we can calculate the transitive states, because in transitive states only then we can see how radiation is observed, how we can see radiation being observed. So it's basically transition from two stationary states. An electron or a quantum particle moves from state A to state B, and in the process radiation can be observed. So हमारा काम ये होगा to just have understanding of how we can see that state. So we can see all of the states radiatively as well as stationary states, and maybe figure out what are the radiative states, and the stationary states which don't contribute, we can ignore those processes or terms in the process and do away with them. So the thing is that what we are going to do is we are going to write psi as function psi, psi is a psi n plus b psi n. So A star A is a probability in the states n, and B star B is probability in the state n. Now you can have such that you can have states such that A star so it can always be true such that A star B plus B star, sorry, A star B and B star B is always equal to 1. That's fine. But initially, if you say electron is in the state or quantum particle in the state E is equal to 1 and B is equal to, so it can move from ground state you can move from ground state to excited state. So it's from this thing equals to this, and A goes from 0 to B is 1. Then ultimately A will go to 1, B is going to 0. So you can start from ground state to excited state, then excited state to ground state, and from excited state to ground state, from ground state to excited state, and then back to the ground state. So you can have so when the electron is in the
either state, means ground state, there is no radiation. It's only in the process. So what we are going to see is basically so we have to see. So we are going to see the states when I do transition. So in ground state, a quantum particle will not radiate. It's only in the excited state. Or if it has gone from higher state to lower state, or lower in the intermediate state, it will only radiate. So we have to explain the same thing from the quantum mechanical understanding. ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल A star A state है, we should define a general state psi as a combination of this state A psi and B psi. These are two states A psi and so again if A star A is N and B star B को हम N के साथ observe करेंगे. It's always that जो probability होगा it will be equal to 1. Now you can always see, so if a particle goes from state A0 and V goes to 1 and ultimately actually a particle will go from ground state to excited state and ultimately from excited state to ground state. So in the two processes, जब हमारी stationary state में होगा वहाँ पर कोई radiation नहीं होगी और when it's in the upper state it's in the transition stage, when it goes from ground up or up to down, ऊपर से नीचे जाएगा तभी photon या radiation release हो जाएगी. So we are going to state all states, ground states, excited states, ground to excited to ground, ground to grounded, excited. ये 4 states बनाते हैं. So which will अगर हमारे इनका expectation can be as minus infinity to plus infinity. So x. But अभी हमने expectation value if you remember psi n को हमने ऐसे लिखा है. Psi n is equal minus E n by h into t. Psi n star हो गया psi n star iota E n h by t. And you can have expectation value is denoted by like this x sin star sin x. Now अब हमारे पास जो है since we have represented psi in terms of this A and combination of B, so हमारे पास जो expectation value पहले x अपना फिर sin star and sin n. So x, so but we have represented psi को इसके साथ and psi star को ऐसे B star sin of x plus B star sin of x. You have sin n and sin x. So हमारे पास ये दो टर्म हैं. तो ये आएगा ये x A star sin nx plus B star sin. This is the A psi n plus B psi dx. Okay. So we will have these two states. This state as this state. But and psi is basically represented by this one state. Psi n for iota. This is one another state. This is another. Sin star और sin में से फर्क नहीं है, exponential में plus because of this thing. Okay. Now we are going to see all the states. So basically we are trying to see both जो quantum state है radiation कब हम करेंगे. जो stationary state या ground state होगी उसमें radiation emit नहीं होती है. It's only in the intermediate excited states. For example, an electron or a quantum particle goes from ground state to up state. In the intermediate stage, radiation is resolved. Or from up to ground जाएगा तब radiation. Whether it's in ground state or intermediate states, मतलब NS01, S, P, D, उसमें वो. So we have to see all the quantum states, which include the ground states
which are stationary states as well as excited states. उनकी सब की combination देखेंगे in terms of sin and sin star. This is the expectation value. So if you represent a state like this as a sin star as it, so it will have both ground. These are A star A, ground state and B star B. ये ground state है A star B plus B star A. ठीक है? That will represent intermediate state. So ये plus A star A plus B star B. B star B. तो ये दो ground state. It's only when an electron or a quantum particle from this to this and नीचे से ऊपर या so these two states will contribute. Okay. So we are going to see this state. This is one state. This is another state. And you just see its इसका expectation value निकालेंगे. Expectation value निकालेंगे हम तो it will be तो पहली वाली state क्या है? A star A square sin x चार terms. I'll write it straight away. I'll write 4 terms which will come out to be. Yeah, आपको जगह करना है. It will take some time. Dx plus b star a, infinity x psi of mx. E to the iota by h. D psi of m e to the minus iota n by h into dx. अब इसी तरह ये b star a है, a star b है, a star this and this. This is infinity x sin star. तो sin के बदले हम ये e to the x. E n by h into d is the sine of m के बदले हम I e m h by d into x. Plus this term b star, this is b square minus infinity x sin star and sin of x dx. इसमें जो हमारे पास this term a star term and this b square term, they will not contribute because they represent two stationary state. ये stationary state maybe it may be in the ground state where n is equal to 2 p. So these two states will contribute. Okay. Which will correspond to those intermediate states where radiation is emitted. What the point? So आप इसमें हम थोड़ा सा काम करेंगे. Since they are it was iota है, you can it was iota x किसके बराबर है? Cos of x plus iota sin of x. It was minus iota x is equal to cos of x minus sin of x या theta be better theta ठीक है. तो you know it. अब ये हमारे पास ये है e to the iota x e to the minus iota x and तो यहाँ ये ऐसे आएगा, it will come like this. So it will be e to the iota and e n minus e m by h dx. तो ये अगर cos of e n minus x minus iota sin, ठीक है. इस तरह दूसरे में भी आएगा cos of this and cos sin of this. So if we sin so इसमें minus आएगा sin term will cancel. So the real part, so अगर imaginary part नहीं, you will take the real part will be इसका real part क्या है? Cos of e n minus e n by h into p. So cos of so if you just take cos 0 is 1 to maximum value, cos of 2 pi 4 pi the integral value of yeah. So em minus em by h into t. So we can write just say E is equal to h into है. So it's basically the energy between two stationary states energy. That's Em minus. You can have Em is equal to h to E
En is equal to H mu, difference of the two will be En minus En is equal to H mu, ये ऐसे आएगा, ठीक है? So we are going to substitute here. 2 pi. So the electron therefore oscillates with the frequency with this frequency periodically. ठीक है? From when it goes from up, then it goes to down. It is the process जो हम देखते हैं वो, है ना? The electron goes from this to this radiation is observed. Or when it goes from नीचे से ऊपर, again the radiation is observed. ठीक है? These two states are stationary states. This A square and this B square. This means either electron or any quantum particle is here or it's here. It's only in the intermediate right states, the transitive probabilities, which will account for the radiation which we are going to observe. ठीक है? अब हमारे पास so this is your the mathematical treatment how you can see the frequency, calculate the frequency of the intermediate states, which depends on particle to that. So allowed, and again allowed there are some rules जिनको कहते हैं selection rules. Selection rules means हमारे पास delta L is equal to plus minus 1 and delta M is equal to 0 plus minus 1. Means जो हमने वो eigen states and eigen values का L है ना, L into L plus 1. So it's going to take only those values, eigen values जो हमारे पास आएंगे, ठीक है? उसी हिसाब से 12 plus 1, ठीक है? जो Schrödinger equation के जो solutions हैं allowed eigen values के, they will be only allowed values, not the other values. Because in classical physics you can expect कोई भी value ले सकता है particle या energy. यहाँ एक तो it should correspond to those eigen values and they should be discrete also, ठीक है? With the boundary of h square h by 2 pi. अब इसी की एक concrete example ये है, you might have studied in your earlier classes something called Zeeman effect. पढ़ा है? Zeeman effect is a particular case in which gives an example of how the allowed transition हम कैसे स्टडी करेंगे. जिस तरह हम नॉर्मली स्पेक्ट्रल है ना कि मतलब एक तो हो गया कि फॉरवर्ड अलाउड रीजन में ये हमको इंटरमीडिएट स्टेट्स में रेडी टू ट्रांजिशंस आर अलाउड. अब जो हमें कल कहा था स्पेस क्वांटाइजेशन, मैंने कहा कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड that only certain trajectories will be allowed for electrons, ठीक है, to pass. अब उसकी जो एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल है, which is something called Zeeman effect. सुना है Zeeman effect का नाम? Zeeman effect में ये है कि before coming to Zeeman effect we will just see कि torque, you will had some number. Torque in a magnetic field क्या होता है?
टॉर्क इज म्यू बी साइन थीटा, ये ना आपने 12th में, है ना, टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड ने कितना काम करेगा, एंड वर्क विच इज टोल्ड इज बेसिकली व्हाट टॉर्क डी थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाय 2 टू फॉर एग्जांपल थीटा। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से, तो हाउ मच टाइम वर्क इट विल टेक टू वर्क करना यहाँ पर, you can have it comes out to be a mu b sin theta है, when you cos into integral it becomes mu b cos theta, cos of pi by 2 is 1, so cos of pi by 2 is 0, it will be mu b cos theta, so this is it, and जो current हमारे पास आएगा mu current is mu is magnetic moment किसके बराबर है, area. So if it passes through some circumference, so it can also be equal to current है, you can also write it as E of 2 pi r square. R square is the area. Current है frequency per unit जो भी है circumference. It is I by L. And if you want to write L as a magnetic angular momentum, you can write it as 2 pi mf r square from this. And electromagnetic moment को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, so this is the ground जो ये फॉर्मूला हमारे पास यूज before coming to what is Zeeman effect. So this is a rehash what of it in your earlier class what you have studied. Energy stored in the magnetic field क्या है, ठीक है, and angular momentum को ऐसे भी represent कर सकते हैं, magnetic moment को ऐसे भी represent कर सकते हैं, and इसी चीज को जो इक्वेशन को है ना, इसको क्या कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो, गायरोमैग्नेटिक रेशो मींस रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास, इसको क्या कहते हैं, जिस तरह आप E by m करते हैं ना कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं लैब में, थॉमसन्स मेथड, हेलिकल मेथड है ना, तो इसको कहते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। तो म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका रिलेशन एंगुलर मोमेंटम के साथ, इसी तरह म्यू बी को हम ऐसे ई एच बाई 2, दिस इज बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, आप वर कमिंग टू दिस रिलेशन, वी आर कमिंग टू ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट ये है कि अगर कोई भी क्वांटम कोई भी पार्टिकल वी प्लेस इट इन सम इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सो इट विल रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस विच यू कैन सी ऑन द इमल्सन शीट। जिस तरह आप एक्सरे भी देखते हैं ना, एक्सरे आप निकालेंगे उसका देखते हैं ना आप, क्या देखते हैं, उसका सिग्नेचर देखते हैं एक्सरे का, अगर वहाँ से एक्सरे आएगी इट कम्स ऑन द स्क्रीन। सो इन द सेम वे स्पेक्ट्रोस्कोपिकली इफ यू कोई भी पार्टिकल को आप या एटॉमिक स्टेट को आप मैग्नेटिक फील्ड में लगाओ, क्या रखो, तो उसकी जो स्टेट्स है ना, जो एनर्जी स्टेट्स, दे विल बी स्प्लिटिंग ऑफ दोज लेवल्स, दे विल बी, अब उसमें 3 लेवल्स होंगे, एक लेवल उसमें होगी द स्प्लिटिंग विल बी पहले Zeeman effect is splitting of spectral lines in magnetic field,
इसी को हम कहते हैं जीमान इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड में। जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी वाली, जो रेडिएटिव स्टेट्स होती हैं, ठीक है, तो दे बी स्प्लिट। तो उसमें स्प्लिट अब दो होंगी, इधर जिस तरह हमारे पास ये है ना, कल हम क्या कहा, ये जीरो होगा एल, ये हो गया ऐसे एल प्लस वन, सो 0 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस ऐसे -1 -2 बोथ साइड्स, एल प्लस 1 यहाँ से भी और यहाँ से भी। सो इट विल बी जिसका हमारे पास है ना कि एल इंटू एल प्लस 1, ठीक है। सो जो आइगन वैल्यूज हैं, दीज आर द आइगन वैल्यूज सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। इसी तरह जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, in presence of a magnetic field there will be splitting of lines both sides of the spectrum. अगर मेन हमारे पास एक स्पेक्ट्रल लाइन है, उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, we will have म्यू 0 प्लस EB by 4 pi m एक साइड से, और म्यू नॉट EB by 4 pi m दूसरे साइड, ठीक है, ऑन द मेन लाइन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू डायग्रामेटिकली लाइक दिस, ये है ना L is equal to 1, ये L is equal to 2 है, L is equal to 1, this is H2। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे, L is equal to minus, चलो माइनस में रखते हैं, माइनस ML0 ML1 ML2, यहाँ से -2 -1 0 1 2 3 ऐसे ऊपर से 1 2 3 so on। So this is this side, so there will be splitting इस साइड से भी, इस साइड से like this, side that और स्प्लिटिंग कैसे होगी सर? स्प्लिटिंग में भी ये होगा ना, so it will be not, it will be transition। तो वी आर बेसिकली प्रीवियस जो था हमारा ट्रांजिटिव स्टेट्स, ठीक है, जो रेडिएशन whether which you are going to observe, it's not observing the stationary states quantum particle, it's in the transition state। अब वो ट्रांजिशन स्टेट में भी जो रेडिएशन होगी ना, उसकी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। सो ट्रांजिशन इज फॉर एग्जांपल दिस टू दिस, उसका रेडिएशन है H2, इस A की भी 3 स्प्लिटिंग, you can have 3 in the presence of magnetic field, there will be 3 levels, sub levels which you are going to observe for this। अब इसका क्यों हो रहा है, इसका भी अपना एक रीजन है, why it's further splits in presence of magnetic field, ठीक है, that's it। So फिलहाल आप याद रखो, और you can have this जो फ्रीक्वेंसी है it splits into this plus this, ये तो अपनी फ्रीक्वेंसी है, ये इन प्रेजेंस ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन, जिस तरह हम टॉर्क लेते हैं, टॉर्क इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एटम है यहाँ पर, कोई एटम, ठीक है, अब एटम नॉर्मल एटम नहीं है, एक्साइटेड एटम। अब एक्साइटेड एटम में ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अप स्टेट और अप स्टेट, जो वो रेडिएशन है ना, इट्स इन अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से अगर नॉर्मल जो हम रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं ना, नॉर्मल एक्साइटेशन, देयर विल बी एडिशनल लाइंस व्हिच वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, इसको हम कहते हैं जीमान, ठीक है, दैट्स इट। अब वो जो एडिशनल फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे अलोंग द मेन लाइन, इट इज कम्स इन द रेशियो ऑफ दिस टर्म। अब ये टर्म कहाँ से हमारे आए, ये टर्म वी गॉट इट फ्रॉम
EV by इसलिए आया हाउ डिफाइन मैग्नेटिक मूवमेंट, हमको निकाला बोहर मैग्नेट्रॉन को हमने ऐसे डिफाइन किया। एंड अब 1/2 का फैक्टर अपना आता है यहाँ से, तो ये 1/4 बन जाता है, ठीक है। बोहर मैग्नेट्रॉन कैसे आता है? इट्स रेशियो ऑफ चार्ज टू मास। सो इट कम्स हाउ डिफाइन मैग्नेटिक एनर्जी में हम जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, हाउ वी कैलकुलेट इट, हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन इन and that is stored in that's external। अब आप इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो एक्स्ट्रा काम करेगा ना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वो एक्स्ट्रा फील्ड जो होगा ना वो उसमें जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ दिस जीमॉन रेडिएशन आएगा, ठीक है। स्टॉप।